Hello bachcho, let's read a question, and the given question is, what is the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride? Means we have to calculate the mole fraction of benzene in a solution which contains 30% by mass in CCl4. So first the key concept. In this question we have to calculate the mole fraction of benzene. So the key concept is the mole fraction. Calculate the mole fraction from a given solution. Now let's check what are the given values. So what we have given, we have only that. For that first we have to assume, let the total mass of the solution is equals to 100, and the given mass out of this 100 is benzene is 30%, means out of 100 the 30 gram is only the benzene. So mass of benzene, therefore mass of benzene C6H6 is equals to 30 gram. So the total solution is 100 gram and the mass of benzene is 30 gram. So benzene and carbon tetrachloride are mixing together to make a solution of 100 gram. So हम यहाँ पे mass of benzene को total solution में से subtract करके mass of carbon tetrachloride find कर सकते हैं, mass of CCl4. CCl4 means carbon tetrachloride. इसका mass होगा हमारा 100 minus 30 gram is equals to 70 gram. So ये हमारे पास values आ गई है, mass of benzene 30 gram, mass of carbon tetrachloride 70 gram. Now calculate the molar mass. So the molar mass of benzene is C6H6 is 78 gram per mole. Molar mass of carbon tetrachloride CCl4 is 154 gram per mole, right? So here the given mass are masses of the solute and solvent, right? So the benzene is 30 gram and the carbon tetrachloride is 70 gram. And if we talk about the molar mass, so benzene का molar mass is 78 gram और carbon tetrachloride का है 154 gram. Now to find out the number of moles, first हमें क्या करना होगा, बेंजीन की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं given weight of solute upon the molar mass. So number of moles of C6H6, उसके लिए हम करेंगे 30. So बेंजीन का मास क्या है 30 ग्राम, the given mass or the given weight, and the molar mass is 78. और जब हम 30 डिवाइडेड बाय 78 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.3846. Now we will calculate the number of moles of CCl4. Number of moles of CCl4. CCl4 is carbon tetrachloride. So CCl4 का वेट क्या था, गिवन वेट 70 ग्राम. मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था 154, राइट.
we will divide it 70 by the 154 mole. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4545 मोल, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के 0.4545 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज 0.3846, राइट। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। 10 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6। सो उसके लिए हम करेंगे मोल्स ऑफ बेंजीन जो हमने फाइंड आउट किए हैं 0.3846 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो टोटल मोल्स हो जाएंगे मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस 3846 प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.4545। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 0.4583 which is approx 0.459. So this is the correct answer. So here we will mark this as a correct answer. 0.459 is our correct answer, the B1. Hope the solution was understandable. You understood it well. Thank you.